and today we are going to start a new poem, and I'm sure you will relate to this a lot. ये तुम्हें बहुत कुछ अपने जैसा लगेगा, इसकी स्टोरी जो इसमें बात बताई गई है, जो नरेटेड है इंसिडेंट, you will really feel it is one of your stories. Why? Because it talks about adolescents and the tendency of escapism in the adolescents. Now, what is this escapism and who are adolescents? Adolescents are people like you, young children, जो तुम्हारे जैसे होते हैं, teenagers. They are the adolescents, and the poem talks about जो डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, और कितना उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है. एस्केपिज्म का मतलब होता है जो प्रेजेंट की रियलिटीज़ हैं वो हार्श फील करना और उससे डिस्ट्रैक्टेड रहना, मूविंग टू सम फैंटेसी लैंड, सम वर्ल्ड ऑफ योर ओन. दैट इज़ कॉल्ड एस्केपिज्म. तो एडोलेसेंस में ये एस्केपिज्म बहुत कॉमन है. And why is it so? Because the young children feel that they are not being understood by others. They feel that others keep nagging them. हमेशा लोग टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, and children feel quite irritated because of that. And it happens with almost everybody. It is more common with the girls because there is a certain social code of behavior, certain social norms of behavior which the girls are expected to follow. So things are more difficult to with girls in comparison to boys. जैसे कि उन्हें कैसे हंसना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, and how they should behave, how responsible they should be. They should always look very elegant, very decent, very impressive. So this social behavioral norms that of course our society has set for the girls, right or wrong, that's a different thing, but then there are a certain set of norms which every girl is supposed to observe, follow rather, not observe only, follow rather, follow. And it means wherever she is, irrespective of the place she is. So here also the poetess has taken up, the poetess Robin Klein has taken up this issue. और एक गर्ल है अमांडा जिसके बारे में बात हो रही है. और अमांडा जो है ये क्या प्रॉब्लम फेस करती है, दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पोएम. एंड लेट्स गो अहेड विद इट. Let's see what this girl Amanda faces. But before that, let's talk about Robin Klein. So Robin Klein, as you can see, is an Australian author and poetess, and her genre is children and young adult fiction. यानी जो young लोग होते हैं उनके बारे में लिखना, poetries, stories, that is her genre. Okay, and then she has written several books, and several of her books have been shortlisted for Children's Book of the Year award. And of course she has won many awards for her literary works. So Robin Klein का genre तो हमने सुन लिया, और ये poetry भी definitely उसी genre की है. Okay, so now let's talk about the poem that we have to study. Now let's talk about that. To start with, this particular poem that we are going to study has different settings. One setting is of the real world where Amanda's mother, perhaps, कहीं लिखा तो नहीं है कि मदर बोल रही हैं, बट जिस तरह का अथॉरिटी है, जिस तरह का वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है स्पीकर अमांडा के ऊपर, उससे लगता है कि वो मदर की आवाज़ है या मदर के लाइंस हैं रादर. तो वो जो मदर की आवाज़ है जो लाइंस में लिखा हुआ है, एक सेटिंग तो वो है जो रियल वर्ल्ड की है, जिसमें कॉन्स्टेंटली जो स्पीकर है वो अमांडा को टोक रही हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, तुमने ये काम कंप्लीट किया, वो किया. ये एक सेटिंग है. The other three settings are of fantasy, are of imaginary locations, which is creation of Amanda's fancies. Okay. Now, which are those three locations? There are three more locations. One is of a green sea, जिसमें अमांडा खुद को एक मरमेड की तरह सोच रही है, ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग विद द वेव्स. द अदर इज ऑफ अ स्ट्रीट, जहाँ पे अमांडा अपने को एक ऑर्फन चाइल्ड की तरह केयर फ्री मूव करते हुए देख रही है, विदाउट एनीबडी अराउंड हिम और हर. देन
थर्ड इज अ रूम एट द टॉप ऑफ अ टावर, जहाँ पे अमेंडा खुद को एक रेपुंजल की तरह देख रही है। रेपुंजल एक फेरी टेल की कैरेक्टर है, और रेपुंजल ग्रिम, ब्रदर्स ग्रिम जो जर्मनी में थे, उनका क्रिएशन है, एक जर्मन स्टोरी है ये रेपुंजल की, और बहुत फेमस फेरी टेल है। सो ये जो डिफरेंट सेटिंग्स हमने देखे, इनमें से ओनली द फर्स्ट वन इज the real world setting. The next three are creations of Amanda's imagination. Okay, so it's written here, fancies Amanda has constructed in her own mind. It is written over here. Now let's start with the explanation of the poem. See, now don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda, of course, seems to be a young girl of your age, perhaps, and she is being instructed to sit properly, to not to keep her shoulders loose, and not to sit in a relaxed manner. She should be sitting very nicely, very elegantly. And it is written over here, the meanings also. Don't bite your nails means many of you have got the habit of biting nails all the time. Then the speaker says don't hunch your shoulders. Now hunch means bend, यानी अपने shoulders पर से झुका के मत रहो. Sit straight, sit elegantly. Then stop that slouching rather, beg your pardon, and sit up straight. Now slouching is sitting in a lazy manner. Okay, टेढ़े मेढ़े कैसे भी casually पड़े रहना. And the speaker, perhaps the mother, says that sit properly, Amanda. ऐसे कंधे झुका के नाखून काटते हुए ऐसे मत बैठो. Sit straight, sit properly. And immediately Amanda escapes to her dream world. She immediately, her mind, when I say Amanda escapes, I mean her mind. So immediately her mind escapes to the imaginary world of her thoughts and fantasies. And what does she think of? Now you see, this bracketed part is Amanda's imagination. She thinks there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now there is a languid emerald sea. Now languid meaning is given very calm, relaxed, एकदम शांत समुद्र है. Emerald is green, so एकदम शांत greenish color का पानी है समुद्र का. Where the sole inhabitant is me, where the only inhabitant, soul means only, inhabitant means somebody who lives at some place. तो एकदम शांत ग्रीन कलर का समुद्र, और जिसमें और कोई नहीं है, सिर्फ अमेंडा है. A mermaid drifting blissfully. Now a mermaid, you know, the mermaid is a half human, half fish creature. It's again a fantasy creature. It is. It appears in fairy tales. Nobody has ever seen in reality any mermaid. So stories में, imaginations में लोग mermaids की बात करते हैं. So half woman and half fish body. एंड शी फील्स कि वो एकदम शांत समुद्र में एक मर्मेड की तरह वेव्स के संग वो ड्रिफ्ट कर रही है ना. ड्रिफ्ट करना मतलब एकदम कंफर्टेबली फ्लोट करते रहना अलॉन्ग विद द वेव्स. द मीनिंग इज रिटन हेयर, कैरीड स्लोली बाय द वेव्स. ओके, ब्लिसफुली इज हैप्पीली, बहुत खुश होकर. यानी जैसे ही उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मदर उसको लगातार टोक रही हैं, तुरंत उसका माइंड एस्केप कर गया. एंड दिस हैपन्स विद मैनी ऑफ यू, आई एम श्योर. ये हर एक अडोलेसेंट के संग ये होता है कि कई बार उनका दिमाग जो है वो एक ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, जस्ट टू सूद देम. ये अपने को सूद करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं, यंगस्टर्स ऐसा करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ लाइन्स, वी लेट्स गो टू डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा. अगेन ये जो लाइन्स हैं ये मदर की बोली हुई लाइन्स हैं. So did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now the mother expects Amanda to keep her things properly, to keep her room tidy. So again she asks कि तुमने क्या अपना homework किया है, and of course be responsible towards her education, her studies. So she says कि क्या तुमने अपना homework किया है, क्या तुमने अपने room को properly arrange करके रखा है, and did you clean your shoes. So all these things the youngsters are supposed to take care of.
and the mother keeps reminding her, and the moment it is reminded again, Amanda's thoughts waver off. They become lost in some beautiful world of her own imagination. And what does she think? She feels, I am an orphan roaming the street. I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. And she imagines herself to be an orphan. An orphan is a child whose parents are dead. Now, one point to note here is that she doesn't wish her parents to be dead. She wishes to be as free as an orphan. वो यहाँ ये नहीं सोच रही है कि काश मेरे पेरेंट्स ही मर जाएं. ओके, शी इज थिंकिंग कि काश मैं उतनी फ्री रहूं और उतना आज़ाद रहूं जितना कि एक ऑर्फन होता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है. रोमिंग द स्ट्रीट मीन्स लाइक एन ऑर्फन शी इमेजिन्स कि वो टहल रही है ऐसी स्ट्रीट पे. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड फीट. हश्ड मतलब बहुत क्वाइट. बेयर फीट चल रही है. बेयर फीट यानी बिना किसी फुटवेयर के. तो वो बेयर फीट चल रही है और जो सैंड है उस सैंड या मिट्टी पे अपने पैरों से निशान बना रही है. ओके, शी इज क्रिएटिंग पैटर्न्स विद हर बेयर फीट ऑन द सॉफ्ट सॉइल. ओके, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. एंड शी सेज कि वो जो शांति है चारों तरफ वो इतनी प्लेजेंट है, इट इज़ गोल्डन. एंड जो फ्रीडम है वो इतना मीठा लग रहा है, वो आज़ादी की. चुपचाप टहल रहे हैं अकेले, चुपचाप अपने पैरों से जो है वो मिट्टी में निशान बना रहे हैं. कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं. Nobody is constantly nagging, constantly speaking, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो. Nobody is there. So she imagines that, rather she hopes that someday she gets a freedom, the freedom like an orphan. Okay, so she does not want her parents to die, but she wants the freedom that an orphan enjoys according to her. Only an orphan can tell you what problems he or she goes through. But here Amanda is very happy to realize the freedom of an orphan. Okay, the meanings are given. Hushed is quiet. An orphan, I have already told you who is an orphan. Now the last set of lines. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Now this again is a problem. Youngsters को chocolates, coffee ये सब बहुत पसंद होता है. But then of course it is not very good for your skin. And youngsters are very prone to pimples. जो youth होता है, जो coming of age है, इसमें pimples का होना बहुत ज़्यादा common है. So the mother is always concerned about the beautiful look and beautiful skin of her girl, of her daughter, and she says कि please chocolates मत खाओ अमेंडा, नहीं तो तुम्हारे एक्ने बढ़ जाएंगे, तुम्हारे pimples बढ़ जाएंगे. And she gets finally irritated and says, कहाँ यहाँ वहाँ देखती रहती हो? Why don't you look at me when I am talking to you? अगेन आई एम श्योर तुम्हें भी कभी ना कभी ये डांट पड़ी ही होगी कि देख इधर देखो जब मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने देखो. ये तुम्हें भी कहा जाता होगा. सो दैट हैपन्स विद ऑल यंगस्टर्स, ऑल द एडोलेसेंट्स. ओके, नाउ सी acne, you can see it means pimples. Now let's proceed to Amanda's dream world. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. And she says कि I am Rapunzel, मैं Rapunzel हूँ. और Rapunzel की कहानी ये है कि उसे एक टावर में ऊपर बंद कर दिया गया था, एकदम टॉप पे एक लोनली रूम में. और उसके बाल बहुत खूबसूरत और बहुत लंबे थे और वो बाल नीचे लटकाती थी विंडो से और उसके बाल पकड़ के ही कोई ऊपर आ सकता था. इन द स्टोरी देयर इज अ विकेड वुमन हु used to climb up holding those beautiful hair, those plates of beautiful hair. Okay, so she says that कि मैं अपने बाल कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी और कोई मेरे पास तक नहीं आ पाएगा. मतलब उस लोनली टावर में ऊपर मैं अकेले रहूंगी कमरे में और मैं कभी किसी को अपने पास नहीं आने दूंगी. आई विल एंजॉय दैट सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब होता है वो अकेलापन. तो आई विल एंजॉय दैट, आई विल फील गुड ओवर देयर. That is what she imagines. Okay.
and the meaning is given: Rapunzel, a girl with long golden hair in a fairy tale. Tranquil is very quiet. Okay, it says in the life in a char is tranquil and rare. Tranquil is very quiet, serene. Rare मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा शांति. I'll certainly never let down my bright hair, and she says, कभी भी मैं रेपुंजल की जगह होंगी तो मैं कभी अपने बाल लटका के किसी को मेरे पास नहीं आने दूंगी. Stop that sulking at once, Amanda. Now these are the final lines from the mother. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So sulking, the meaning is given to be in a bad mood. चेह मुंह लटका के बैठना, upset रहना. So mother says कि come on, मुंह बना के मत बैठो अमेंडा, तुम्हारे ही लिए मैं बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही हूँ. सो डोंट मेक फेसेस, ऐसे चेहरा बना के मत बैठो. और तुम्हें तो हमेशा ही मूडी हो. यू आर सो अनस्टेबल, योर टेम्परामेंट इज सो अनस्टेबल. यू आर ऑलवेज मूडी. समटाइम्स यू बिकम हैप्पी, समटाइम्स यू बिकम अपसेट, एंड देयर इज नो वैलिड रीजन फॉर इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एंड देन शी सेज कि ऐसे चेहरा बना के मत बैठो, अदरवाइज पीपल विल फील कि मैंने तुम्हें हैरस किया है बोल बोल के. सो दैट इज द यूजुअल कन्वर्सेशन ऑफ एनी पेरेंट विद एनी एडोलेसेंट. एंड सबके लाइफ में ये बहुत कॉमन होता है. बट चिल्ड्रन, द पॉइंट टू नोट इज दैट both need to understand each other. The parents need to understand the child's tendency, and that they feel disturbed when they are constantly guided or instructed to do something or the other. And the children like you on their end should understand कि जो parents बोलते हैं that is for your own benefit. Since they are more experienced, they have seen the life more than you and better than you, they definitely have all the rights to guide you. So now with this we come to the end of the paraphrase and analysis of this poem. Now let's move on to the poetic devices used. So now children, we will talk about poetic devices जो इस poem में use किए गए हैं. And the first one is anaphora. Anaphora मैं पहले भी बता चुकी हूँ. Anaphora का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लगातार lines अगर same word से start हो. So you can see the text here, and you must also keep marking it in your NCERT book. Okay. Now see, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching. So ये don't और don't, ये दो लगातार आया है. फिर यहाँ पे did you finish, तो did you यहाँ दो बार आया है. So this is anaphora. This is an example of anaphora. So ये दो lines और ये दो lines anaphora में कहा जाएगा. Now metaphor. Metaphor का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ों को compare करना without using as or like. Metaphor हम लोगों ने start किया था पढ़ना क्लास 10th में, जो first chapter है लेंचो, वहाँ से start किया था हमने. उसमें भी metaphor के बहुत सारे examples थे. Now see here. So she says emerald sea. Now emerald here, emerald is actually a stone. तो emerald जैसा sea वैसा ही green shining. तो यहाँ emerald sea actually sea को emerald से compare किया जा रहा है, green color से compare किया जा रहा है. तो first example is this, and then she says I am a mermaid. I am a mermaid means I am like a mermaid. So ये भी एक मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया कि शी इज़ कंपेयरिंग हरसेल्फ टू अ मरमेड ड्रिफ्टिंग इनटू दैट ब्यूटीफुल वाटर, ब्यूटीफुल सी वाटर यू मस्ट से. देन शी सेज आई एम एन ऑर्फन. अगेन अपने को एक ऑर्फन से कंपेयर कर रही है. एंड देन साइलेंस इज गोल्डन. शी फील्स साइलेंस इज एज प्रेशियस एज गोल्ड, एज much wanted as gold. Okay, so silence is golden. This also you should take as a metaphor. And then she says I am Rapunzel. She's comparing herself to Rapunzel. Again example of metaphor. So ये सारे examples हैं metaphor के, where Amanda is comparing herself to some person or some fictitious character or something, and she is not using as or like. यानी as और like यूज़ किए बिना अगर हम दो चीज़ों या दो लोगों को कंपेयर करते हैं, that is called as metaphor. Now the next one is repetition. बहुत सारे repetition के examples हैं, words जो repeat होते हैं, जैसे don't repeat हुआ है, फिर यहाँ पे
डिड यू फिनिश है, देन अमेंडा, अमेंडा हर एक लाइन में रिपीट हुआ है. सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ रिपीटिशन ओवर हेयर. यू कैन सी पर्टिकुलरली अमेंडा वर्ड कई बार रिपीट हुआ है पूरे पोएम में. ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिशन. नाउ नेक्स्ट इज इमेजरी. इमेजरी का मतलब होता है ऐसा डिस्क्रिप्शन जो रीडर के या लिसनर के दिमाग में वो इमेज क्रिएट कर दे. कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन जो किसी भी रीडर या लिसनर को ऐसा फील कराए कि वो एक्चुअली वो जगह या उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है. तो यहाँ ये जो 3 एस्केप्ड इमेजिनरी प्लेसेस हैं जहाँ पे वो भाग के जाती, जहाँ उसका माइंड भाग के जा रहा है, वो जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी हैं. द फर्स्ट वन, दिस की शी इज ड्रिफ्टिंग लाइक अ मरमेड. अगेन दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी. देन वो पैर से अकेले टहल रही है और पैर से हश्ड, अपने हश्ड फीट से जो है वो बना रही है सर्कल्स उसमें सैंड में, सॉफ्ट सॉइल में. So that is again an example of imagery. And when she imagines herself to be Rapunzel, that is also a good example of imagery. So you have 3 examples of imagery over here. Then alliteration. Alliteration, I told you, repetition of a prominent sound. वो sound चाहे 2 लगातार words में हो, starting में या फिर किसी line में कोई prominent repeated stressed syllable हो. जैसे कि हम लोग अगर first stanza में देखें, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये स साउंड रिपीट हुआ है. ओके, सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. देन यू कैन हैव दिस स्टॉप दैट सल्किंग. स्टॉप दैट सल्किंग का मतलब अगेन सल्किंग, आई टोल्ड यू, मुंह बना के बैठना, अपसेट होके बैठना. स्टॉप दैट सल्किंग में अगेन स इज वेरी प्रोमिनेंट ओवर है. सो एनी स्ट्रेस्ड सिलेबल रिपीटेड, या सिंपल भाषा में कहें कि कोई भी साउंड अगर रिपीट हो रहा है, प्रोमिनेंट साउंड किसी लाइन में या 2 लगातार वर्ड्स में, देन दैट इज एलिट्रेशन. एंड दैट साउंड हैज टू बी अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड नॉट अ वॉवेल साउंड. ओके, नाउ एल्यूजन. एल्यूजन एक नया फिगर ऑफ स्पीच है, एक नया पोएटिक डिवाइस है जो तुम अभी पढ़ रहे हो. अभी तक तुमने 10th में ये डिस्कस नहीं किया है. एल्यूजन का मतलब होता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट चल रहा है उसमें एक सडन रेफरेंस किसी हिस्टोरिकल या किसी इमेजिनरी या मिथोलॉजिकल फिगर का कोई रेफरेंस अगर दिया जा रहा है जो एक्चुअली इससे कनेक्टेड नहीं है, बट एक सडन रेफरेंस किसी इंसिडेंट पे दे दिया जा रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज एल्यूजन. जैसे कि यहाँ पे रेपुंजल का जो रेफरेंस है, Rapunzel exists in fairy tales. She is a fictitious character, and a sudden reference to her just to explain the bliss of solitude at the top of her tower is an example of allusion. Okay, and lastly the rhyme scheme. You can see, let's see from the first one. जो first stanza है उसमें rhyme scheme होगी. अगर हम इसको भी एक separate line मान लें तो A, that will be the rhyme scheme of the first stanza. और उसके बाद जो है, जो next stanza है, that will be all C. Okay, so see me blissfully, so C and D you can say. First stanza में A and A, that is the rhyme scheme. Rhyme scheme हम already कई बार discuss कर चुके हैं previous lectures में. So let's I hope rhyme scheme is clear. If not, then let me just tell you. कोई भी स्टैंजा ले लो, यूजुअली किसी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा लिया जाता है किसी पोएम का, और वो जो फर्स्ट स्टैंजा हम लेते हैं उसका लास्ट वर्ड लेते हैं. जैसे यहाँ अमेंडा, जब अमेंडा बोल रहे हैं तो कोई साउंड सुनाई दे रहा है, इस साउंड का नाम कर दिया ए. जब स्ट्रेट बोल रहे हैं तो वो अलग साउंड है, वो अमेंडा जैसा नहीं है, तो इसका हमने कर दिया नाम बी. एंड अगेन यहाँ पे सेम अमेंडा है, तो राइम स्कीम हो गया A. ओके, सो चिल्ड्रन, with this we come to the end of discussion on this poem Amanda, and when we meet next we will be taking up some other chapter. Till then, go through the poem, make your notes, go through the poetic devices particularly, and above all, take care. Bye.